Assalamu alaikum and welcome back to our podcast. I'm your host, Sayyidah Hashmi, and today we're going to explore the complex and often misunderstood topic of mental health. From anxiety and depression to bipolar disorder and schizophrenia, mental health conditions can have a profound impact on individuals and their loved ones. In 2022, WHO reported that more than 20 million people in Pakistan were affected by mental health issues. To shed light on this, we have Dr. Nosheen Kazmi with us today. Dr. Kazmi is an associate consultant psychiatrist at Shifa International Hospital and specializes in child and adolescent psychiatry, including working with patients who have autism and ADHD. Assalamu alaikum, Dr. Nosheen. Kaisi hain aap? Walaikum assalam. Alhamdulillah. Thank you. So first of all, thank you so much for coming here and taking the time to educate us and talk to us about mental health. Pehle to mujhe bataएं, can you tell me the difference between psychology and psychiatry? I think a very useful question in Pakistan. I've been here for the last 1.5 years. बहुत commonly मुझे लोग psychologist कह देते हैं. Psychiatrist आप तब बनते हैं when you've done your medical school. So you've done your MBBS for 5 years and then you specialize in psychiatry, which is general psychiatry, and then you choose a subspecialty of psychiatry, which can be anything, can be old age, can be adult psychiatry, can be child and adolescent. And that's how you become a psychiatrist. And you can prescribe medication as well, and you can do counseling as well. Every psychiatrist is trained to do at least 6 sessions with the client. Psychologists, on the other hand, are bachelors and masters in psychology specifically. And then they go on to do further training in clinical psychology to become a clinical psychologist. So they are not trained to prescribe any medication. They cannot. They can only provide counseling sessions as per their expertise. Right. So why did you choose psychiatry then? I chose psychiatry when I was doing my house job in the UK. I think it's a lot about communication skills. It's a lot about empathy and how much you are interested in other people's life histories. And one of my supervisor suggested that to me, that you should go for psychiatry. And I asked him that question. I was like, why do you think so? Like, I think you can be a good listener and you're a problem solver. So I think these are the two things that I got from my supervisor that he suggested. And I went for it as a blind go. And I think it's worked pretty well. एक होती है poor mental health और एक होती है mental illness. So what do you think is the difference between the two? देखिए, poor mental health is a very generic term. Anything can come under it. You know, people who have a sedentary lifestyle, they don't go for exercise, they're not working, they just like stay up all night and sleep all day. That's your poor mental health, you know. That's you're inviting a mental illness here. Whereas a mental illness or a mental disorder has to be very specific. Every mental illness has a specific number of or set of symptoms that then classify it as a mental disorder. For example, if you talk about depression, you cannot just say if somebody is sad or crying, they're depressed. No, the depression has to be for, you know, if they're sad and crying with number of other symptoms for at least 2 weeks on most days of the week. So if somebody is very sad and upset and they have low energy levels and they don't feel like doing the activities that they previously used to do, they're not sleeping, they're not eating, they have suicidal thoughts, and that is carrying on for at least 2 weeks, most of the day, every day. That is what you classify as depression. Whereas poor mental health is when you're sleeping late, you're getting up late, you're still, you know, one day you're in a bad mood, next day you're okay. So that is poor mental health, but that doesn't classify as a mental disorder. So what about like something happened in your life and there's a cause for you to feel the depression, but that's just, you have poor mental health for a while. That doesn't mean that you have the illness. Yeah, you know, if some people have acute stress reaction, for example, something really gone bad in their life, and they have a very acute stress reaction. For example, they've lost a parent or they've failed a major exam. They'll be very stressed out for a number of days, can be 2 days, 3 days, a week, but you cannot classify it as depression. That will be acute stress reaction. If it prolongs for more than 2 weeks, then you will classify it as depression. But sometimes depression has a cause, sometimes it doesn't have a cause. So do you think at that point when you're feeling that acute stress, do you think someone should reach out for a therapist or something like that, or do you think it will go away on its own? I think it depends on person to person. Some people are really good with their coping strategies. They have coping skills. They do apply different sorts of strategies in their life, which can be mindfulness, can be breathing exercises, can be just extra workout or seeing friends or adopting a hobby or maybe carrying on with their usual activities. And that's when they don't need to come if they are coping okay. But if you feel, you know, 3 days, more than 3 days have passed and you just can't handle yourself and nobody around you can handle yourself. You don't have any social support. You don't have any friends to look after you or any family around. So there's no harm
Yeah. Seeing a psychologist or a psychiatrist is never going to do you any harm. You can always go, you can always vent out, you can do 1 or 2 sessions as per your need, and talking never harms, you know. Like, to me, it's like often we get a flu, right? Everybody knows we've had flu multiple times in our life, more than multiple times, right? But still, we go to the doctor. Why? It's just to get it checked, Again, right? with flu, not everybody would end up with the doctor, you know. Some people feel like that it's a viral illness, it's going to go away. But yes, but when it starts to get a bit nasty, well, you know, you've been in fever for the last 4 or 5 days, and then you realize that I think I should seek medical. This seems like a bit odd, or this seems like not manageable with the kind of medication I am taking. So there's never any harm, I would say, in seeing a therapist in order to vent out, and you'll always learn from a therapist. And in fact, when you narrate your own story about that stress reaction, you are the problem solver yourself then. Yeah, I've read about this. When you speak about it out loud and you hear it with your own ears, and the whole thing is in your mind, and it starts to like solve the problem. It starts to make sense. And that is what therapy is about, you know. Therapist is just facilitating your thoughts. They're not putting new thoughts in your head. They're not changing your thoughts. They're just facilitating your own thought pattern by making you talk. That's true. That's true. तो you know, हमारे यहाँ पाकिस्तान में ख़ास तौर पे बहुत प्रेशर आ जाता है स्टूडेंट्स पे to just do well, get better grades, medal लो, gold medal है, silver medal क्यों आया, like just, you know, be the top of the top, best of the best. So what do you think are some of the most common mental health symptoms that the students go through or students feel? Very, very common in Pakistan. I think, yes, the academic pressure is immense. बहुत ज़्यादा है, और वही बात है आपकी कि A क्यों आया है, A star क्यों नहीं आया. You know, so there are parents who would force such things, and there are candidates or students as well who would like to get an A star. They're not happy with an A. Even they want to be the top of the A star as well, not just कि मतलब 90 से ऊपर आया है तो A star है, but no, it should be 95 से ऊपर होना चाहिए. So that craving for going from 1 to 2, 2 to 3 is never ending. और mental health definitely affect होती है, और ऐसे जो लोग होते हैं जो बहुत super intelligent होते हैं, they're super academic, they are the worst sufferers. उनकी mental health बहुत ज़्यादा affect होती है. In the last 2 years of being in Pakistan, I have seen so many O-level students who have scored 8 A stars in O-levels and now struggling in A-levels. क्योंकि आपका एक pressure, brain एक pressure एक हद तक tolerate कर सकता है ना. अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हैं and you're not doing anything else and you're just craving after grades, then there'll come a point in life when you'll break down. That's actually happened with me. So I sat for 10 O-levels in 1 year. Did like science and business and everything. I was like, karte hain. And I did pretty well, alhamdulillah, अच्छा था. But I went to A-levels, so A-levels I did 4. I was going for 4 AS. And then I was talking to my guidance counselor, and she asked me, what did you do? History पूछी थी, and I said, well, I did 10 O-levels, and इसमें ये था, ये grades आए थे. She said, but why? And no one had ever asked me, like, why are you doing 10? Everyone was like, अच्छी बात है, करो. My parents, my teachers. और जो school में मैं थी, वो थोड़ा different mentality का था. और जहाँ से मैं A-level करी थी, they were a lot more, वो थोड़ा British था, तो they were a lot more like, you know, relax, इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. तो जब मैंने उनसे बोला कि मैं A-level कर रही हूँ, and I was really stressing out, I was really having a hard time with one of my subjects. So I was told, go to the guidance counselor. जब मैं गई उनसे बात की, and she was like, but why did you do 10? And I said, I don't know. I was just told to. I did. उस वक्त मेरे स्कूल में 10 ही offer होते थे. So I did all. So if there were more, I'm pretty sure I would have done all. And she's like, yeah, but don't you think you're just burnt out now? How are you going to manage? Like, this is not life. O-level is not the end of life. Like, that's the start of your exams, वगैरह. So she was like, think about it and drop one. So for the first time in my life in grade 12, A-level करते हुए, I had a free period. And I was like, ये भी होता है इधर क्या करते So it was such a relief, and I did a lot better with my other subjects because I had that time to just decompress for a while. And that's important. Because if you don't allow yourself to decompress, you will suffer. You will break, you will break down, you will burn out. We do talk about breakdown and burnout quite a bit, but we don't realize it, you know. So आपका जो question था कि mental health symptoms क्या हो सकते हैं. So you can see your grades going down. You can see you're not happy. You know, you can see yourself always on the edge. People start having anger issues, they start having fights, start having relationship breakdowns, stop being friends with people. You're just studying and not doing nothing else. और आपके friends जो हैं वो आप सिर्फ ये कह रहे होते हैं let's go out for coffee, and you're like, no, I have to go home, I have to study. So you end up losing those friends and you're disconnected from your family as well, because you're all the time in your room,
रात को आप जाग रहे हैं और आपको फैमिली सो रही है, दिन में आप सो रहे हैं और फैमिली जाग रही है, तो यू लूज दैट कनेक्शन विद योर फैमिली एज वेल. यू फील लाइक यू डोंट हैव टाइम फॉर एनी काइंड ऑफ हॉबीज और एनी काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. सो आप बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं फ्रॉम द वर्ल्ड. Right. That's so sad because that's where you're building your personality. That's where you're like, becoming a person who will face the world. Like schools to... That is why it's not all about grades. What is the youngest age जिसमें बच्चे जो है वो symptoms feel करते हैं? I think अगर हम इसको क्लासीफाई कर लें 2-3 पार्ट्स में तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं हमारे पास जो अंडर 7 या अंडर 8 आते हैं, दे आर यूजुअली ब्रॉट इन बाय पेरेंट्स. उसमें एकेडमिक कंसर्न्स होते हैं, ज़्यादातर बिहेवियरल इश्यूज होते हैं. चाइल्ड गेटिंग एग्रेसिव या स्क्रीन बहुत देखता है, बात नहीं मानता, ज़िद्दी है, इस टाइप की कंप्लेंट्स ज़्यादा आती हैं. बच्चे को कोई उस स्टेज पे कुछ खास पता नहीं होता कि वाई एम आई हियर. वो समझता है कि बस डॉक्टर के पास आए हैं और दैट्स इट रियली. वो सेपरेट इशू है. उसमें द चाइल्ड कैन जस्ट हैव बिहेवियरल इशूज बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम, या फिर ऑटिज्म हो सकता है, लर्निंग डिसेबिलिटीज हो सकती हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है. तो देयर आर अबाउट अ फ्यू डिसऑर्डर्स जो हम नेम कर सकते हैं इन दैट पर्टिकुलर एज ग्रुप अंडर द एज ऑफ 7-8. देन कम्स द एज ग्रुप बिटवीन 8 एंड onwards, 8 and 12 or maybe 8 to 18, जिसमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, OCD which is the obsessive compulsive disorder, कोई ट्रॉमा है तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, they are the common ones that we get to see. Again, behavioral issues or behavioral concerns which then lead to becoming a disorder. जिस तरह conduct disorder है कि बच्चे बात नहीं मानते, टीचर ने कह भी दिया, even then they're not listening. Oppositional defiant disorder होता है. तो इस तरह के काफ़ी सारे चीज़ें हैं which move on from the age of 8 to 18. तो most commonly जो आजकल present होता है that is depression and anxiety amongst that age group. और अगर lower age group की बात की जाए तो I think autism and ADHD are the common ones that I get to see on a daily basis. तो कोई ऐसी चीज़ होती है you think कि the child is like 8 or 9 और उसमें कोई ऐसी सिम्टम है जो आगे चल के बहुत अफेक्ट कर रहा होता है if it's not addressed at that age? बहुत सारे सिम्टम होते हैं. अब जिस तरह ADHD की ही बात कर ली जाए, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की, पीपल डोंट रियलाइज इट एट अ वेरी अर्ली एज, यू नो, कि बच्चा फोकस नहीं कर पा रहा, बच्चा अटेंशन नहीं दे पा रहा. देयर जस्ट हैमरिंग द चाइल्ड कि आपने पढ़ना है, आपने क्रिएटिव राइटिंग करनी है, बस आप करें. And the child is not capable of doing it. उसको समझ ही नहीं आ रही. 10-15 मिनट के बाद उसका फोकस खत्म हो जाता है. 40 minutes lecture he cannot listen to. After 10 minutes he's gone. Mentally he's not there. Zone out हो जाता है बच्चा. तो वो चीज़ें रियलाइज़ नहीं होती. बच्चे को भी ऊपर हैमर हो रहा होता है, ट्यूशन पे भी जा रहा है, स्कूल में भी पढ़ रहा है, घर में भी होमवर्क में स्ट्रगल कर रहा है, बट द पेरेंट्स आर लाइक, नो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद यू, गेम तो तुम बड़ी अच्छी खेलते हो और बाकी सब काम तो तुम बिल्कुल ठीक करते हो, तो व्हाट्स रॉन्ग विद पढ़ाई. तो ADHD का प्रॉब्लम ही है कि दे कैन डू लिटिल थिंग्स, दे विल बी वेरी गुड इन मैथ्स बिकॉज दैट्स क्विक मेंटल मैथ्स, लेकिन इफ यू टेल देम टू राइट 200 वर्ड्स का एक पैराग्राफ लिखने को, तो दे विल स्ट्रगल, क्योंकि उसमें सस्टेन्ड मेंटल एफर्ट चाहिए. सो दे विल ओनली स्ट्रगल विद द टास्क विच रिक्वायर एक्स्ट्रा मेंटल एफर्ट, विच रिक्वायर प्रोलॉन्ग्ड मेंटल एफर्ट. और जो काम जल्दी हो जाते हैं, आर्ट वर्क है, मैथ्स है, फिजिकल एक्टिविटी है, दे विल बी वेरी गुड इन दोज थिंग्स. तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं इग्नोर. और अगर 8 to 18 वाला एज ग्रुप भी है, उसमें वेरी कॉमन फॉर टीनेजर्स कि वो अपने कमरे में रहते हैं, ज़्यादा बाहर नहीं निकलते, बहुत ज़्यादा इंगेज नहीं करते फैमिली के साथ, दे हैव देयर ओन वर्ल्ड, टू मच स्क्रीन टाइम, मोबाइल्स में बहुत ज़्यादा बिजी हैं. फिर आपके जो मेंटल हेल्थ सिम्टम्स हैं वो अनडायग्नोज्ड रह जाते हैं और डिले हो जाता है डायग्नोसिस में. Right. So, as like you said, बच्चे are like within our care, right? With parents and educators. What can parents and educators do to create that safe environment कि बच्चे जो हैं वो at least बात कर सकें, या things that we should look out for? देखो, सबसे पहले जिस तरह आपकी पॉइंट था कि मैं अपनी गाइडेंस ऑफ काउंसलर के पास गई थी, वी डोंट हैव दैट फैसिलिटी. सबसे पहले तो ऐसा एक डेजिग्नेटेड बंदा होना चाहिए स्कूल्स कॉलेजेस में, वेयर यू नो हु यू कैन गो टू. और हमारे स्कूल्स कॉलेजेस में से आई थिंक अगर 100% में से मेरा ख्याल है 5-10% में होगा, एंड देयर इज नो काउंसलर. पीपल डोंट नो हु टू गो टू. जब स्कूल से बात करते हैं और हमसे कहते हैं कि आपके स्कूल में काउंसलर नहीं है या साइकोलॉजिस्ट नहीं है, वो कहते हैं नहीं, क्लास टीचर तो है, बट क्लास टीचर इज नॉट अ साइकोलॉजिस्ट. द टीचर, सम ऑफ द स्टूडेंट्स माइट बी स्केयर्ड ऑफ दैट टीचर. वो नहीं उनके पास जाना चाहते, उनकी उनसे रैपो नहीं बनती, दे विल नॉट एंड अप विद दैट टीचर. तो स्कूल में गाइडेंस काउंसलर होना चाहिए. द चिल्ड्रन, ऑल चिल्ड्रन शुड नो वेयर दे कैन गो, एंड दैट पर्सन शुड बी अप्रोचेबल. ऐसा नहीं है कि आपने अपॉइंटमेंट ली है और फिर आप भूल गए हैं कि कब जाना है उसके पास. दैट्स नंबर 1. और अर्ली मेंटल हेल्थ साइंस शुड बी नोन बाय एवरी पर्सन इन द स्कूल एंड एट होम एज वेल. कि अगर एक बच्चा लो मूड में आ रहा है, आपको लग रहा है कि उसका एकेडमिक
गोल्स जो हैं वो नीचे जा रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस नीचे जा रही है, या उसकी जो अटेंडेंस है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है, एब्सेंटीज़ बहुत ज़्यादा हैं उसमें, और बंकिंग है, क्लासरूम में वो आ ही नहीं रहा, या क्लासरूम में आके अपना काम कंप्लीट नहीं कर रहा, और होमवर्क्स आप दे रहे हैं, होमवर्क्स इनकम्प्लीट वापस आ रहे हैं, घर पे भी वो आ रहा है, इज़ जस्ट अलूफ, या अपने ही कमरे में है, या आप सारा दिन फ्रेंड्स के साथ बाहर है. तो एनी चेंज इन बिहेवियर फॉर दैट चाइल्ड इज़ वरीसम. You need to look out for that, for parents as well and for teachers, both. So, आपने कहा parents should also, most of the tips were कि schools में भी कोई एक therapist होना चाहिए, and approachable होना चाहिए, qualified होना चाहिए, so that अगर कोई मसला हो, कुछ हो, the children can go there. They should be encouraged to have an appointment and go there. और parents should also keep an eye out अगर कोई change in behavior हो, right? But what point do you think we should encourage parents कि अगर ये सब कुछ हो रहा है, then take them to the therapist? I think 1 month to 2 month duration is more than enough. अगर आपको लग रहा है कि 1 महीने से पिछले आप चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, यू नो, यू सैट विद देम एंड आपने उनसे बात की है, आपने ट्राई किया है कि वो बता दें आपको कि क्या प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, द स्टिल द चाइल्ड इज़ गोइंग डाउन हिल, महीना गुजर गया है, तो आई थिंक इट्स नेवर अ बैड आइडिया. आपको नुकसान नहीं होगा ना किसी थेरेपिस्ट के पास जाने का. मैक्सिमम ये होगा कि येस, यू गो टू द थेरेपिस्ट, योर चाइल्ड स्टार्ट्स टॉकिंग, यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, यू सॉर्ट द प्रॉब्लम आउट एंड एवरीथिंग इज फाइन. But don't you think अगर parents इस तरह अपने बच्चों के साथ बैठे and they have this, because most of the parents don't have the tact, and how do you even start this conversation? And then it becomes कि यार थोड़ी वो लड़ाई authoritative type हो जाते हैं वो, and child feels attacked. कि ये तो मतलब मुझे Start attack कर रहे हैं. becoming judgmental. Yes. So what can parents do to have this open conversation, to have this space के जहाँ पे वो अपने बच्चों से बात करें and like broach this subject without it being, without the child feeling like they're being threatened? देखिए, parenting is an art. और there's no training. True. There's no training for it. You know, we all become parents and we're never taught parenting. बाकी हम हर चीज़ सीखते हैं, हर चीज़ हम जाके लर्न करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, बट पेरेंटिंग कभी भी कोई लर्न नहीं करता. ना हमारे से बड़े लोगों ने लर्न की, ना हमारे से आगे वाली जनरेशन लर्न करेंगी. बट पेरेंटिंग प्रोग्राम्स एंड पेरेंटिंग इज़ अ स्किल इन इटसेल्फ. एंड आई थिंक व्हेन आई टेल इट टू ऑल द न्यू पेरेंट्स कि जब भी आप पेरेंट बनने लगे या बन गए हैं, लर्न इट, एक्सप्लोर इट. Yeah. True. Speak to the people around you, learn from people's experiences. चाहे आप गूगल हम बहुत यूज़ करते हैं, but go on it, and there are so many parenting programs on it जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं. और वो आपको इतनी गाइडेंस देते हैं अबाउट अर्ली लाइफ प्रॉब्लम्स कि आप शुरू ही से बच्चे के साथ अगर उस तरह की रेपो बनाते हैं तो those kids have never got a problem. You know, all those kids जिनको मैं देखती हूँ with a very good mental health, and then we ask them कि आप को कभी थेरेपिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एंड दे से यस, बिकॉज जब भी कोई मसला होता है तो माई पेरेंट्स आर देयर एंड आई कैन शेयर इट विद देम, और वी ट्राई एंड कम अप टू अ कंक्लूजन. तो उनके कोपिंग स्किल्स इतने अच्छे होते हैं, और उनकी जो अपना एक्सप्रेशन है फॉर देयर फीलिंग्स एंड बिहेवियर, दैट इज़ सो गुड कि उनको ज़रूरत नहीं पड़ती किसी और के पास जाने की. तो आई थिंक इट बिगिनस फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज. तो दैट इज़ वाई पेरेंटिंग सीखना बहुत ज़रूरी है, जिसका हमारे मुल्क में बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है. और आप कि लोगों को कन्विंस नहीं कर पाते कि पेरेंटिंग सीखनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं आ जाती. I think they just duplicate whatever they were taught. Like उनके साथ जो हुआ था उनके पेरेंट्स ये करते थे तो बस they do the same But times have changed. Exactly. Last 12-15 years में the world has changed. Yeah. आप और मैं ये पॉडकास्ट ना कर रहे होते आज से 15-20 साल पहले. बिल्कुल. ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. द फर्स्ट आईफोन केम अराउंड 2007-2008. Yeah. उससे पहले हमारे पास छोटे वाले फ़ोन होते थे. जी. तो थिंग्स हैव चेंज 15 ईयर्स में. बहुत ही जो पिछले 15 साल में इतना ड्रामेटिक चेंज आया है, तो दे जो अभी के टीनेजर्स हैं, दे आर अ वेरी डिफरेंट जनरेशन. आई एम वेरी डिफरेंट फ्रॉम माई children. Yes, the generation gap between me and my parents was not that much. क्योंकि we were all in the same generation जहाँ पे फ़ोन एक है, घर में है, और वो लैंडलाइन है and all that stuff. और एक ही तरह का हमारी अपब्रिंगिंग थी. लेकिन अब जो मैं अपने आप को देखूँ, where I have seen the evolution, and if I see my kids, तो my kids have no concept कि फ़ोन नहीं भी होता था, या टीवीज़ नहीं होते थे, या they can watch anything anytime. They don't have that concept कि वो 6 बजे अगर कार्टून लगे हैं और वो 7 बजे ख़त्म हो गए हैं तो I cannot replay them. That's true. But they don't have that concept. They're like, मतलब अच्छा अभी चल रहे हैं, it's fine, we'll watch them later on the YouTube. Yeah, that's true. So things have changed so much in the last 15 years. Generation gap between us and the future generation is immense. That's true. तो उसको build करने की ज़रूरत है.
और आई थिंक पेरेंटिंग मोर चैलेंजिंग होती जा रही है एज द टाइम गोज बाय. Yeah, I think it's very important for parents कि जब वो अपने बच्चों के साथ डील करें to have at least that open space जहाँ पे वो कुछ भी बोले ना तो one of my always tips is don't react. और जब वो बच्चा कुछ बता रहा है even if it's something really bad, don't react. उस वक्त that child needs to know that I can say this to my parents without them giving any reaction. फिर बाद में talk about it. Have a discussion. Tell them कि देखो ये जो था यहाँ पे आप गलत थे, यहाँ पे वो गलत था, ये यूं नहीं करते, जिस तरह करना है. लेकिन उस वक्त if you react, delayed reaction is very important. Yeah. जो immediate reaction होता है ना, एक impulse होती है हमारी, impulsive reaction होता है, that's never goes well. Yeah, true. रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, आप उसी टाइम बाहर खड़े होकर लड़ना शुरू कर दें, इट never go well. True. You park your cars on the side, you take a deep breath, you have a glass of water, and then you come out and try and speak and sort it out. It's going to be much better rather than कि आप उसी वक्त बीच सड़क में गाड़ी से निकल आए और लड़ना शुरू कर दें. तो it's all about your reaction times. Reaction parents फिर भी देंगे अगर आपके बच्चे ने कोई गलत काम किया है, बहुत severe किया है, तो you will give a reaction. But a delayed reaction works well. क्योंकि बच्चा आपसे फिर बात छुपाएगा नहीं. Exactly. They will not hide. Yeah, that's the main thing. और कहते हैं ना कि आपकी पेरेंटिंग इट रियली इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ चाइल्ड द चिल्ड्रन इज. क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं डिफरेंट काइंड्स, आपकी पेरेंटिंग स्टाइल एंड कम्युनिकेशन स्टाइल ऑल्सो चेंजेस डिपेंडिंग ऑन दैट चाइल्ड. सो कीप दैट इन माइंड. अगर एक चीज़ आपने कहा है अपने बच्चे को, एक बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है स्टडीज़ में, मे उसके लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वर्क्स बेटर. उसको शाबाशी दो, वो और अच्छा करेगा. एक है उसको थोड़ा सा आपको इंटाइज करना पड़ता है, थोड़े थ्रेटन इज अ pretty intense word, लेकिन थोड़े से consequences बताने पड़ते हैं कि देखो ये नहीं करोगे तो ये नहीं मिलेगा. Then they go for it. You deal with every child differently. सबको आप एक ही तरह से, आपके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, आप सबको एक तरह से नहीं बड़ा कर सकते. Which is the problem, you know. अब एक बच्चा एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग है, वो A-star स्टूडेंट है, दूसरा नहीं है, ठीक है, दूसरा A है या B+ है, तो लर्न टू डील विद इट. आप वो फर्स्ट का जो प्रेशर है वही सेकंड पे डालेंगे तो वो जो A या B ले रहा है वो भी नहीं लेगा. और वो फिर सारी उम्र वो कंपैरिजन में. एंड देन जो नेगेटिव बात इसमें ये होती है कि आप उन दोनों का आपस का रिलेशनशिप भी ख़राब कर रहे होते हैं. यू आर बाय कंपैरिजन. बिकॉज आई हैव सो मेनी एडल्ट्स जो मेरे पास अब आते हैं और वो हमेशा ये कहते हैं कि आनी हमेशा कंपैरिजन होता था घर में और हमेशा उसको जो है ना वो इम्पोर्टेंस मिलती थी. ऑल्दो शायद नहीं होता होगा ऐसे, पेरेंट्स सबके लिए इक्वल वो करते हैं, लेकिन एक ना एक बच्चे को ज़रूर बीच में फील होता है कि मेरे साथ ज्यादती हुई है. और वो फिर उसकी अपने सिबलिंग के साथ कभी भी वो रेपो और वो रिलेशनशिप नहीं बिल्ड हो पाता जो होना चाहिए. और इसमें कसूर पेरेंट्स का होता है, उसमें बच्चे का नहीं होता. that I agree with. तो आपने बात मेंशन किया था काफ़ी दफ़ा कोपिंग मैकेनिज्म पे, तो कैन यू गिव मी अ लिटिल एग्जांपल ऑफ हाउ वन शुड कोप? कोपिंग मैकेनिज्म्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अब मेरे कोपिंग मैकेनिज्म्स माइट बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम यू. ठीक है, इफ आई एम स्ट्रेस्ड आउट आई विल ट्राई एंड एंगेज माई सेल्फ इन समथिंग very intense. I'll either go for a jog, I'll either call a friend जिससे मैंने वो बात नहीं करनी जिसके बारे में मैं stressed out हूँ. I'll just talk about random things. I'll plan a lunch with somebody. I'll start deep cleaning. I'll do something which breaks that pattern of thoughts. Okay. जो thought chain मेरे दिमाग में चल रही है ना कि ये हुआ, ये क्यों हुआ, ऐसा हुआ, मैं or the reason I'm becoming stressed out. So I'll try and break that cycle. Other people are different. People start stitching, sewing, knitting. Some people isolate themselves. They just go in their room and shut the door and they don't want to talk to anybody. I'm the opposite. Right. I'll call somebody and I'll talk about random चीज़ें. मैं बिल्कुल different हूँ उस aspect से, लेकिन हर एक का अपना coping mechanism होता है. But what would you say are the 3 general things that people can try to cope with whatever they're dealing with? I think not being alone, number 1. क्योंकि जब आप अकेले होते हैं तो आई थिंक आप ज़्यादा स्ट्रेस आउट होते हैं बिकॉज देयर इज़ नो वन देयर टू गाइड यू एंड यू आर जस्ट रूमिनेटिंग ऑन योर ओन थॉट्स. आप क्वेश्चन भी खुद कर रहे हैं अपने आप से और आप उसका आंसर भी खुद दे रहे होते हैं. तो देयर इज़ अ फुल नेटवर्क ऑफ थॉट्स इन योर हेड. देन आफ्टर अबाउट 1 घंटे के बाद ना आप अपनी ही एक स्टोरी बना के उस पर स्ट्रेस आउट हो रहे होंगे. तो एक तो नॉट बीइंग अलोन. नंबर 2, engaging yourself in an activity. It can be anything. Either watch a movie which is totally out of context from what you are stressed about. And third, physical activity जो मैंने पहले भी mention किया. Just go out for a jog, go for a run. That's true. It really helps you break that cycle. आपने cycle break करना है जिस तरीके से भी आप करें. Yeah, I think I do this. जब मेरे साथ हो रहा होता है, I just go like in my room and then I watch something very light, very like rubbish TV. Doesn't make sense. Just to वो करें, like I can feel it in the back of my mind. Things are working in hyper speed. Unwind हो रहा होता है. Yeah, but I'm just gonna focus on this. Very like वो जो Hallmark movies
type, I'll watch those. Nothing too intense. नहीं तो फिर I'm not gonna focus. Yeah, I'll read a really like chiclets, like what relax वाली चीजें, and I'm just like, yeah, let's just That feel works. good, happy thoughts. Exactly. You need to break that thought chain in your head, and that's the key. So we mentioned this. What about जब बच्चे जो हैं, they are aware, because like we said, kids are a lot more aware nowadays than the parents are, and sometimes some parents are still stuck in that stereotypes or कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता. So what do you think if a child feels it, or a teenager whatever feels कि यार मैं depressed हो रहा हूँ, या I'm having these problems, how can they communicate that with their parents effectively? I think कोई right and wrong answer नहीं है इसका. I think sitting with their parents, spending a lot of time with their parents and sharing their thoughts, feelings and behavior is very very important. क्योंकि हमारा जो thoughts, feelings और behavior है, ये एक triad है. जो हमारी thoughts होती हैं वही हमारी feelings को generate करती हैं, और वही फिर वैसा ही हम society में behave करते हैं. तो I think sharing them with your parents is very very effective. अगेन यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है कि क्या पेरेंट्स आपको अंडरस्टैंड कर भी रहे हैं या नहीं. तो कुछ बच्चे आते हैं मेरे पास, एंड आई टेल देम कि आपने अपने पेरेंट्स को बताया है, या इज देयर एनीबडी विद यू टुडे, एंड दे लाइक नो, दे डोंट अंडरस्टैंड मी, या दे नॉट सपोर्टिव इनफ, या उनको साइकाइट्री का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. हाँ, अगर आपने ट्राई किया है, 2-3 दफ़ा ट्राई किया है, उनसे बात की है, अपनी फीलिंग्स को शेयर किया है, और फिर भी आपको लगता है कि दे आर नॉट सपोर्टिव इनफ, या दे हैव डिस्कार्डेड योर आइडियाज़, और या उन्होंने आपको बिल्कुल एक्नॉलेज नहीं किया आपकी थॉट्स को, तो फिर तो बात ठीक है दैट यू सीक प्रोफेशनल हेल्प एंड एक्सप्लेन एंड ट्राई एंड एक्सप्लेन टू देम. बट सम पीपल दे डोंट इवन ट्राई, दे विल नॉट डिस्क्लोज इट टू द पेरेंट्स एट ऑल, क्योंकि उनका एक जनरल कॉन्सेप्ट होता है कि पेरेंट्स को तो कुछ नहीं पता, और दे विल नॉट अंडरस्टैंड इट, दे विल स्कोल्ड मी. और वही फिर इनिशियल बात आपकी पेरेंटिंग पे आ जाती है, दैट अगर पेरेंट्स ने एक अच्छा रेपो बनाया होगा बच्चे के साथ कि वो उनके साथ थॉट्स एंड फीलिंग्स शेयर करें, तो फिर बच्चा करेगा और आप अंडरस्टैंड भी करेंगे. और फिर आपकी वही बात आ जाती है कि रिएक्शन ना दें. अगर आप रिएक्शन देंगे तो बच्चा कभी भी नेक्स्ट टाइम आपको आके नहीं बताएगा. Right. And what are your thoughts on telehealth? Like लोग अक्सर therapy सीख करते हैं through like online. So they go like ठीक है अब हम जा नहीं रहे. So I think that's also an option. But what are your thoughts? It is an option, and it's become very advanced in the last 2-3 years because of the COVID pandemic. मेरा अपना personal अगर आप opinion मांगे तो I think it's not the same as face to face. Like for example, if we were doing this podcast over telehealth, it wouldn't have been the same. True. तो अब हम यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं, तो हम we can see each other, you can judge my body language, you can, you know, there are a lot of things that you can see. Yeah. और I can see, मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है about mental health and about what you are inquisitive to know. इसी तरह जब टेली हेल्थ आप करते हैं तो yes, the initial appointment I think आप कर सकते हैं, there is no harm. लेकिन I think if it is a series of appointments, तो कुछ appointments face to face होनी चाहिए, because I don't think एक effective talking therapy आप दे सकते हैं किसी को without meeting that person in person. But do you think it's a good alternative for? It is a good alternative. Something is better than nothing. True. वाला हिसाब है. We have so many. I have so many clients from Afghanistan because they have visa issues, so they cannot come and see us in person. So they tend to do tele consultations. और I would say जहाँ face to face conversation या consultation 100% effective होती है, these are about 70% effective. But if it's a long-term therapy where they have to do like 12 sessions with you, so I think face-to-face is much better. Okay. So is there anything else you would like to educate our viewers on or something like that? The only thing I would like to say is जिस तरह हम physical health को seriously लेते हैं, अगर हम उसी तरह mental health को भी seriously लेना शुरू कर दें, तो we'll be in a much better place. Much happier with our lives. Because everybody is stressed out these days. किसी को financial stresses हैं, किसी को social हैं, किसी को family stresses हैं, कोई education या job की वजह से stressed out है. We all have something going on in all our personal lives. अगर हम 1 minute अगर अभी सब चुप हो जाएं और सोचें about our stresses, so you can easily identify 1 या 2 problems जिसकी वजह से हम थोड़े से edgy हो रहे हैं या थोड़े से हम stressed out हो रहे हैं, जिसके बारे में हमारे पास कोई solution नहीं है. सारी problems का solution नहीं होता. If you have a family dynamic going on जिसमें आपके parents are at the verge of their relationship breakdown, you can't do anything about it. Yeah. They have decided the family is dividing into 2 parts. You have to choose which parent you're going to live with. This is something which is going to affect you. So
आई थिंक इम्पॉर्टेंट है कि जिस तरह हम फिजिकल हेल्थ को इम्पोर्टेंस देते हैं, फ़ौरन हम खांसी बुखार कुछ भी होता है तो वी एंड अप टेकिंग एन अपॉइंटमेंट एंड वी एंड अप गोइंग Yeah. वेरी क्विकली. हम कभी भी वेट नहीं करते कि हफ्ता 2 हफ्ते गुजर जाएंगे तो उसके बाद जाएंगे. वी टेक इट राइट देयर एंड देन. आपको पेट में दर्द हो रही है, यू विल गो एंड सी अ डॉक्टर. Yeah. तो आई थिंक इट्स द सेम, दैट सीक professional help as soon as possible. There's no harm Yeah. in taking one appointment, going and discussing. And if you feel like एक appointment के बाद आपको ज़रूरत नहीं है तो आप ना जाएं दोबारा. But at least you will at least be able to recognize your own thoughts and try and problem solve things and help the people around you. Look Yeah. out for mental health signs around you at workplace, out and about with your friends, or even at home. Yeah. क्योंकि mental health is invisible. We Yeah. cannot see it. We can only identify it Yeah. through gestures, through body language. It will be very traumatizing for you अगर आपने किसी की help नहीं की and the next day you find out that person has committed suicide. So you'll be very Yeah. devastated. For example, if you take the example of this room and you Yeah. don't know somebody is very depressed Yeah. and you don't ask them, आपने उनसे नहीं पूछा उस दिन ऑफिस में वो कैसे हैं, you left them on their own because you thought, I don't think इसका दिल कर रहा है बात करने का, मैं नहीं पूछती. The next day you find out that person's not anymore. You'll be guilty. Yeah. Very You will much be. so. You will be. You Yeah. will be like, मैं पूछ ही लेती, मैं जाके चाय ही पूछ लेती, मैं उसके साथ लंच कर लेती. You know, there are so many things that you can think later on. तो जो आपको उस वक्त समझ आ रही होती है कि I think I should go and ask that person. I should probably, अगर वो बात नहीं भी करना चाह रहा आपसे उस बारे में, but at least you can go and talk about something else that can make that person feel better. Yeah. I think it's very, very important to identify mental health symptoms and signs around us and then convince them to go and seek professional help. That's so true because I knew someone very close to me and she was going through something and I didn't know but I could guess that she's not okay. I was also very young and she was also very young. So we were just sitting one day और हम बात कर रहे थे और करते कराते she was like कि ना अच्छा अब ये करो, अच्छा अब ये करो. And I was just humoring her. तो मैंने कहा अच्छा ठीक है जो तुम कह रही हो मैं इसको replicate कर रही थी. तो करते कराते उसने कुछ किया and I don't know, it was something very silly or कुछ हुआ and we just like burst out laughing. वो इतना हंसी. And then she told me years later that time period for her was so dark and that the fact that I was humoring her उससे बात कर रही थी and then when we started laughing, for her that laugh broke, like was that brightness in the dark, that light in the dark. और कहती है उसके बाद से she suddenly felt like she could breathe. And like years later, I had no idea. To me, that was just like, चलो यार इसका mood थोड़ा off है, I'm just बैठ जाती हूँ साथ, कोई बात नहीं, मेरा क्या मतलब, let's just give her some time. और फिर बाद में मुझे पता चला कि वो छोटा सा जो मेरे लिए was nothing, like I was just hanging out with her. और उसके लिए वो it was such a big deal, brought her like she was like, no, now I can breathe easy. That's such a big statement to say कि यार हंसने के बाद I could breathe easy. So it's all about time, Yeah. giving time. You know, we're living in the era where everything is automatic and so easy, but still we don't have time. Yeah. We don't have time for family. We don't have time for friends. We sometimes don't have time for work colleagues as well. हम आते हैं, काम करते हैं और घर चले जाते हैं. So giving time to all those set of individuals that you interact with on a daily basis. अगर आप time देंगे तो you'll easily identify that next person is going through something That's true. and they need help. That's true. But thank you so much,